Let's begin with a new topic today, functions of commercial bank. In previous class, we are done with the classifications of bank. Bank is classified in two heading. One is commercial bank and second is central bank. What is commercial bank? We have already seen. Now today we will begin with the functions of commercial bank. Commercial bank performs several functions which are as under. First one is primary function and second one is secondary function. Primary function में first one है accept deposit. You know that whenever we have certain savings in our hand, we usually deposit in a bank because we feel that it is one of the safe purpose, and with the safety, along with the safety, we also get a rate of interest. That is the reason why we deposit our savings in bank account. But still you can deposit in the various way. So what are the types of deposit? That also we will see. A bank accept money from the people in forms of deposit. It gives safety, एक तो हमको safety भी देता है to the deposit of its customer by acting as custodians of the fund, and in way people lend their saving to bank for which bank also gives them interest. तो एक तो घर में पैसे रखना सेफ नहीं है, तो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है कि हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करें, एंड सेकेंड इसके हमको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट. करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो नॉर्मली इट इज़ open with the bank in the name of business or firm or by an individual. Okay, under this account कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको डेज में कितने भी विड्रॉल करने हैं आप कर सकते हो. ये एक बिजनेसमैन के लिए है. सो दैट इज़ वाई देर इज़ नो लिमिटेशंस ऑन विड्रॉ ऑन द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स यू डू ड्यूरिंग अ डे. ऑन टॉप ऑफ दैट यू ऑल्सो गेट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी मिलती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या है कि जैसे कि आपके बैंक में 1 लाख रुपीज़ है लेकिन आपको नीड है 2 लाख रुपीज़ की, तो बैंक बाय रिव्यूइंग योर क्रेडिट वर्दीनेस बैंक विल गिव यू परमिशंस कि 1 लाख रुपीज़ है फिर भी 2 लाख विड्रॉ करना है तो आपको 2 लाख विड्रॉ की फैसिलिटीज़ देती है. तो बट द थिंग इज़ कि जो आपने 1 लाख एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉल किए हैं बैंक से, you have to pay that amount, that overdraft amount to the bank within the specified time limit with the rate of interest. इसके लिए ये जो अकाउंट है उसमें बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, ऊपर से आपके ऊपर से सर्विस चार्ज लेती है या फिर कोई ना कोई चार्ज लेती है, बिकॉज there is no limitation in any of the transactions and you can even get an overdraft facility. See, a current account is open with the bank in the name of business, firm or an individual. The deposit in this account are more liquid than the deposit in any other account. Withdrawal can be made from this account any number of times during a day. ऐसा हमारे नॉर्मल अकाउंट्स में ऐसे नहीं होते हैं. जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसमें विड्रॉवल की लिमिटेशन होती है, बट इन दिस अकाउंट देयर इज़ नो लिमिटेशन. The customer of this account are given checkbook. You get checkbook, but you do not get a rate of interest. But on contrary, certain times bank may impose some kind of service charges on this account. Go to your page number 37. A customer may even obtain overdraft facilities for business purposes on this account as per the rules of the bank. What is overdraft? When you withdraw more money than you are having in your account. That is overdraft. Next is saving account deposit. सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या है कि आपके जो भी कोई सेविंग है, लाइक यू हैव डिपॉजिट इन अ मंथ और अ 2 मंथ और अ 3 मंथ, जिसमें जो सेविंग आप अपने हाथ में, यू नो के व्हेन वी हैव मनी इन आवर हैंड वी यूजुअली स्पेंड इट. yes, so we feel that depositing in a bank is more safe. So people usually deposit saving for the shorter period in this account for which bank gives them interest. Upon requirement they can withdraw with a check or withdrawal slip. Okay, and in present time they can also withdraw money from this account by using a debit or the credit card. ये सेविंग बैंक के ऊपर है. नाउ सेविंग बैंक में हमको एक और एडवांटेज है कि हम विड्रॉल कर सकते हैं, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली लेसर देन योर रिकरिंग अकाउंट, देन योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. Nowadays in saving account we have an facilities of using debit and credit card. We get rate of interest, but rate of interest comparison to other account is very low. That is your recurring account and the fixed deposit account. Saving account के भी एक टाइप है, वो है saving account has another types which is known as in recurring deposit. This deposit are also a type of saving deposit. People who do not wish to save or cannot save bigger sums of money
save and deposit small amount each month for the short periods of time in this account. रिकरिंग अकाउंट उनके लिए है जो फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म में अपने पैसे ज़्यादा सेव नहीं कर पाते हैं. तो फॉर दोज पीपल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो कि आपके एवरी मंथ 500 रुपीज़ बचते हैं, तो आप बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलवा दो. रिकरिंग अकाउंट का एक बेनिफिट यह है कि उसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं कंपेयर टू सेविंग अकाउंट. तो एवरी मंथ यू हैव टू डिपॉजिट 500 रुपीज़ इन योर रिकरिंग अकाउंट. एंड इफ़ यू हैव ओपन रिकरिंग अकाउंट फॉर 36 मंथ या 48 मंथ्स, आपने जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो अकाउंट खुलवाया है उतने टाइम के लिए आपको 500 रुपीज़ एवरी मंथ यू हैव टू डिपॉजिट. एंड एट द एंड ऑफ योर टर्म पीरियड यू विल गेट ऑल योर मनी बैक विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, thus the saving gradually increase and interest is paid on the accumulated money. Thus this deposit are called recurring deposit. By rules of bank, if a person skip to deposit some month money in this account, he or she have to pay the penalty along with the some interest loss. मतलब कि अगर आपने जनवरी में पैसे डिपॉजिट किए, फेब या मार्च का आप पैसे 500 रुपीज़ पे करना भूल गए, ओके, तो नेक्स्ट मंथ में, दैट इज़ इफ़ यू फॉरगॉट टू पे द मनी फॉर द फेब, तो आपको मार्च में फेब्रुवरी का भी पैसा भरना होगा, मार्च का भी पे करना होगा. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और जो आपने फेब में पैसे डिपॉजिट नहीं किया है उसका इंटरेस्ट भी आपको खोना पड़ेगा. सो वेन एवर यू ओपन रिकरिंग अकाउंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप बिना भूले आप वो अकाउंट में अपने पैसे डालें. देन थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट इज फिक्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट क्या है कि दिस डिपॉजिट्स आर फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चूज सच डिपॉजिट. जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 10,000 20,000 रुपये है एंड यू डोंट नीड इट फॉर 7 years और फॉर 6 months और फॉर 1 year, तो आप वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो. फिक्स डिपॉजिट पेज यू मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू योर रिकरिंग डिपॉजिट एंड योर सेविंग डिपॉजिट. बैंक पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट. जितने भी टाइप के डिपॉजिट है उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं. कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑन सच डिपॉजिट्स. ओके, यू कैन इवन विड्रॉ मोर मनी अगर आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है तो. द सेकेंड प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़. बैंक गिव यू क्रेडिट फैसिलिटीज़. व्हाट इज़ क्रेडिट फैसिलिटी? बेसिकली इट इज़ अ लोन पर्पस. जबकि आपके पास पैसे नहीं है और आप बैंक से लोन लेते हो. लोन rate of interest depending upon for what purposes you are taking, okay, and whenever you take any credit facilities from the bank, remember one thing, that you have to mortgage any of your assets. Just see, when individuals or investors or farmer or any other professions also required money for personal or for investment purposes. हमारे 3 सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर. इसमें से किसी को भी अगर लोन चाहिए, पैसे चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए फॉर द इंडिविजुअल, मतलब पर्सनल लोन चाहिए या फिर किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, सो दे कैन बोरो फ्रॉम द बैंक एंड बैंक प्रोवाइड क्रेडिट बाय चार्जिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक प्रोवाइड यू बट यू हैव टू पे अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, बोरोइंग क्रेडिट कैन बी फॉर द शॉर्ट, मीडियम और फॉर short term, medium term or for long term. Bank provide you credit in 3 ways, that is for the short term, medium term and long term. This term periods are not strictly fixed. Short term कितना है, medium term कितना है, long term कितना है, ये कोई periods fix नहीं है, but still here it is classified. May vary for the different activities. ये depend करता है कि आप कौन से purposes के लिए लोन ले रहे हो. However, in a theoretical sense, short term is a period up to the 1 year. मीडियम टर्म इज़ फॉर द 1 to 5 year एंड लॉन्ग टर्म इज़ फ्रॉम 5 to 15 year. ये क्लासीफाइड है कि शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 year, मीडियम 1 to 5 year एंड लॉन्ग टर्म इज़ 5 to 15 years. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पजेज, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजन, for agriculture activity or for business activity. Okay, you can take credit from the bank for your personal reason or for your different types of business purposes or for your agriculture need. And as I have told you before that the rate of interest charge vary with the purposes. मतलब कि आप कौन से पर्पज़ के लिए लोन या क्रेडिट बैंक से ले रहे हो, for what purpose you are taking credit, depend on that the bank will charge you a rate of interest. The third primary function is payment and withdrawal facility. A bank provide easy payment and withdrawal facility to its customer.
Okay, bank provide easy payment, okay, and withdrawal facilities to its customer in form of check. You can even withdraw, you can even make payment using all those checks, withdrawal or payment slip, draft, pay order, ATM, credit card, debit card and internet banking and etc. yes, अभी तो पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस हो गई है, ई बैंकिंग एंड ऑल दैट आ गया है, तो सो पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए, जैसे कि चेक है, विड्रॉवल या पेमेंट स्लिप्स है, ड्राफ्ट है, मनी ऑर्डर, पे ऑर्डर है, ATM है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग्स, एंड दीज आर सम ऑफ एन एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। योर फोर्थ इज क्रेडिट क्रिएशन, दिस इज ओमिटेड टॉपिक, सो जस्ट टर्न योर पेज नंबर 38। Fifth primary functions of a commercial bank is interbanking transaction. Interbanking transaction, bank provides short-term and long-term credit to one another from time to time. Short-term credit is provided by one bank to another bank through the central bank, and this is called call money. The interest rate on call money is called the call money rate. ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि call money क्या है, कि when one bank have shortage of fund, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के पास आज कोई विड्रॉल करने आया है लेकिन बैंक के पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करती है, एक्सिस बैंक HDFC बैंक से बोरो करती है। तो वो HDFC बैंक जब एक्सिस बैंक को पैसे देती है, ओके, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देती है, एंड इट इज़ नॉर्मली फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, तो वो होता है कॉल मनी। ओके, व्हेन वन बैंक बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक, दैट इज़ नोन एज कॉल मनी, और जो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं कॉल मनी रेट। द इंटरेस्ट रेट में वेरी अपॉन फॉर हाउ मेनी लॉन्ग और हाउ मेनी अमाउंट यू आर टेकिंग एंड फॉर हाउ मेनी टाइम, फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशंस you are taking. Okay, so this was your primary function. Second is secondary or other functions of commercial bank. Bank also performs certain other function which is agency and utility services. First जो primary functions हमने देखा उसमें हमने देखा कि related to the money it was. Yes. Now secondary functions में besides the money, पैसे की लेन देन में ही सिर्फ बैंक इन्वॉल्व नहीं है, देर आर सर्टेन अदर सर्विसेज विच बैंक इज प्रोवाइडिंग. सो सेकेंडरी सर्विसेज में एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, अ बैंक प्रोवाइड वेरियस यूटिलिटीज एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटीज टू इट्स customer. Bank act as an agent to its customer. For example, why it is known as an agent? Just see, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter. Import export business में जब आपको letter of credit चाहिए तो बैंक provide that letter of credit to the exporter on behalf of the importer. Then bank also provide underwriting services to the various businessmen. Underwriting services हमने last year भी देखा था कि अगर आपको underwriting services चाहिए, that you are the credit worthiness customer of a bank, तो bank provides you that underwriting services also. Bank also provide facilities to its customer to pay tax challan. Yes, you can pay your tax GST by using your bank account. Bank also provide safe deposit vault on rent to its customer. आपको ज्वेलरी रखने के लिए, अपने वैल्यूएबल चीज़ रखने के लिए बैंक प्रोवाइड यू अ लॉकर्स फैसिलिटी wherein they can safely store their precious jewelries, documents in etc. Bank also provide microfinance facilities for the very small business which are important for the development of the communities. When some payment are to be made with foolproof securities, bank also provide services to the payer by issuing draft and pay order. So these are the types of services that bank provide. Just turn your page number 39. The secondary function में second one है providing various facilities with the changing time. Okay, as the banking scenario and the economy is moving faster, banking में भी बहुत changes आ गया है. Okay, बहुत सारे हम modernizations देख रहे हैं, from table to computer, from cash to e-bank. Yes, तो ये सारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए, एंड बैंक ऑल्सो हैव टू मूव ऑन विद दिस चेंजेस. सो प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज विद द चेंजिंग टाइम. बैंक इज एन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट. There is a continuous expansion and diversifications of the function, activities and services of the bank.
कंटिन्यूज उसमें एक्सपांशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है और बैंक भी वो सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करती है. इन प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ द अनदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक without using cash or check is done through facilities like NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू हम इंस्टेंटली विद इन सम आवर्स के अंदर हम किसी को भी पैसे दे सकते हैं. एंड RTGS विच इज़ नोन एज एन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड बोथ दिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग विच इज़ नोन एज एन सेंट्रलाइज्ड ऑन टाइम रियल टाइम एक्सचेंज. ये फैसिलिटीज़ यूज़ करके हम विद इन सम आवर्स वी कैन सेंड मनी इन विच एवर अकाउंट वी वॉन्ट. ऐसे नहीं है कि एक बैंक ही दूसरे बैंक वन लाइक इफ़ यू हैव एन अकाउंट इन एक्सिस बैंक, तो ऐसे नहीं कि RTGS और NEFT आप सिर्फ एक्सिस बैंक से ही, आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट है लेकिन आपको SBI में पैसे डालने हैं तो भी आप NEFT और RTGS कर सकते हो. बिसाइड्स कस्टमर कैन गेट वेरियस डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट एज वेल एज मेक पेमेंट. येस, यू कैन गेट योर स्टेटमेंट वेन एवर यू आर इन नीड, यू कैन गेट डिटेल्स. आपको अभी तो मोबाइल में मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट बैंक प्रोवाइड. यू कैन इवन बाय योर गुड्स यूजिंग इन ऑनलाइन. आप नॉर्मली अभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. यू कैन इवन बुक योर टिकट्स. देयर इज़ वेरियस फैसिलिटीज़ which are provided by a bank nowadays using your bank account on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking app. Okay, if you have a mobile banking and internet banking app. Bank also provides safe deposit vault and facilities for demat account. What is demat account? जो हम शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट. सो यू कैन इवन ओपन एन डीमेट अकाउंट्स इन योर बैंक. This is an account where shares, debentures, bond and etc. can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. ओके, सो वट एवर शेयर आपने जो भी शेयर मार्केट में अपने पैसे डाले हैं, आपके उसके जो भी सर्टिफिकेट्स है, यू कैन गेट इट दैट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेदर देन होल्डिंग देम इन फिजिकल फॉर्म. मतलब कि पेपर पे खोने का डर है, फिर चोरी होने का डर है एंड ऑल दैट. इसके वजह से आप डीमेट अकाउंट खुलवा दो तो सारे आपको जो भी अपने शेयर मार्केट के जितने भी सर्टिफिकेट्स है, यू विल गेट इन एन इलेक्ट्रॉनिक form. So this is what and primary and secondary functions of commercial bank is. If you have any doubts, just let me know.